One simultaneously, adverb. एक ही वक्त में, एक साथ, बैक वक्त. At the same time. Two bizarre, adjective. अजीब और गरीब. बेताका. बेढंग. अजीब. Very strange or unusual. Three hybrid, noun. दो नस्लन. मिलाप. दोगला. बदजात. The offspring of two plants or animals of different species or varieties, such as a mule. For disillusioned, adjective. एतमाद खत्म होने की वजह से मायूस. Disappointed in someone or something that one discovers to be less good than one had believed. 5. Maverick, noun. आजाद ख्याल. आजाद रहने वाला. An unorthodox or independent-minded person. 6. Adulation, noun. चापलूसी. खुश आमदीद. Excessive admiration or praise. 7. Overwhelming, adjective. इंतहाई. जुज़ती. कवि. Very great in amount. 8. Horrendous, adjective. भयानक. खौफनाक. हौलनाक. Extremely unpleasant, horrifying, or terrible. 9. Monumental, adjective. यादगार. Great in importance, extent, or size. 10. Stance, noun. मौक़िफ़. हालत. कैफ़ियत. नुक्ता नज़र. The way in which someone stands, especially when deliberately adopted, as in cricket, golf, and other sports, a person's posture. 11. Neutrality, noun. अलहदगी. गैर जानिबदारी. The state of not supporting or helping either side in a conflict, disagreement, etc., impartiality. 12. Speculation, noun. क़ियास आराई करना. सट्टाबाजी. The forming of a theory or conjecture without firm evidence. 13. Discourse, noun. गुफ्तगू. जायजा करना. Written or spoken communication or debate. 14. Lament, verb. नौहा. रोना. गम में चीखना. Express passionate grief about. 15. Browbeat, verb. धौंस जमाना. हरासा करना. Intimidate someone, typically into doing something, with stern or abusive words. 16. Milieu, noun. मुआशरती माहौल. A person's social environment. 17. Adversity, noun. आफत. बदकिस्मती. मुसीबत. नहुसत. A difficult or unpleasant situation. 18. Expediency, noun. ज़रूरत. मुफीद. हिकमत अमली. The quality of being convenient and practical despite possibly being improper or immoral, convenience. 19. Dissension, noun. मुखालफत. बिगाड़. नाइतफाकी. इख्तिलाफ. फूट. Disagreement that leads to discord. 20. Convene, verb. इजलास करना. तलब करना. Come or bring together for a meeting or activity, assemble. 21. Pledge, noun. गिरवी. कफालत. अहद. वादा करना. A solemn promise or undertaking. 22. Forge, verb. जालसाजी. पगलाने वाली भट्ठी. Make or shape a metal object by heating it in a fire or furnace and hammering it. 23. Innovative, adjective. इजादी. इख्तिरा. इख्तिराई. जदीद. Of a product, idea, etc., featuring new methods, advanced and original. Riven by discord. Tariq Khosa. Dawn Editorial. Published on December 10, 2022. For more videos subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning.
In a country riven by discord, the extent of disagreement among people, their political representatives and their media outlets feels simultaneously intransigent and untenable. Not only are we bad at agreeing with one another, we're also terrible at arguing with one another. Author and columnist Pamela Paul's words apply to us equally well. The situation we find ourselves in cannot be dealt with through anything less than plain speaking. Bizarre things have happened over the last few months, especially since the political coup in April. The architects of the hybrid rule could not wait to see the results of their experiment in political engineering through to completion. Imran Khan was perceived to have fallen short of fulfilling the promises made in 2018. Even his supporters were disillusioned and resigned to defeat at the hustings due in 2023. But by a quirk of history and miscalculations of the string pullers, the Maverick populist was catapulted to new heights of adulation by an overwhelming sympathy wave. That resulted in resounding political victories in bipolls, and exposed the machinations of the powers that be and the shenanigans of two mainstream parties along with a hodgepodge of scattered opportunists willing to become pawns on the political chessboard. The string puller-in-chief, appointed by Nawaz Sharif and given an extension in service in 2019 by Imran Khan, exposed himself the most as the architect of political engineering, with horrendous consequences for a national institution that enjoyed public esteem for its monumental sacrifices in combating terrorism. The bull in a china shop went on a demolition spree and then took a palpably incredible stance of political neutrality, practically abandoning the hybrid regime cobbled together by his minions in 2018. An internal power struggle came to the surface on a key appointment of the sleuth-in-chief. Systemic caution was thrown to the winds. Speculation about future four-stars in contention became grist for the rumor mill, a national pastime in the absence of transparency in governance and lack of dignity in political discourse. We need a new social contract between the state and society. Meanwhile, the cipher issue was blown out of proportion. The norms of diplomacy were violated. A senior U.S. official's conversation with our ambassador in Washington was conveyed through an encrypted diplomatic message to the Foreign Office. It contained threatening and impolite displeasure for our government of the day and the concerned stakeholders. Correctly interpreted as amounting to interference in our internal affairs by the National Security Committee, a decision was taken to issue a démarche, a diplomatic retort to the superpower to let us mind our own business in the internal and foreign policy domains. However, the cipher was unfortunately used to serve the purpose of political point scoring by building a narrative of trying to break the shackles of slavery and striving for real independence. One is reminded of Jen Ayoub's lament of friends, not masters, and Z.A. Bhutto displaying a similar letter from the same superpower to browbeat him over nuclear ambitions. The following conclusions can be drawn from the current political milieu. Imran Khan has gained substantial public support despite political adversity. He has galvanized the youth to support his cause to regain power. Huge public rallies and protest marches refuse to wither away, although he has not been able to achieve the two objectives of his protests: selection of an army chief of his choice and force an announcement of early elections by the PDM government. His threat to dissolve the Punjab and KP provincial assemblies is again a tactic to get an early election date. The game of thrones and political survival is being played in Punjab in particular. An experienced opportunist has managed to gain political space as the chief executive. He has always been part of the King's party. His king is based in Rawalpindi. There are striking similarities with the friction in the mid-1990s between the federal and provincial governments. Good governance has been sacrificed at the altar of political expediency. Both the Chief Secretary and IGP, appointed by the federal government, buckled under political pressure and opted to go on leave. The resultant administrative paralysis has had serious consequences for the rule of law and service delivery. The economic meltdown and political dissension are bound to have dire consequences. Imran Khan can either accept the federal government's offer to hold talks, without any prior conditions,
or wait till October 2023 for general elections on terms set by the PDM government whose handlers may not be available for mediation in view of the change of army command. We know from history that Nawaz Sharif, Benazir Bhutto and Imran Khan earned the support and respect of the masses as underdogs when they refused to be dictated by the political agenda set by the security establishment. Therefore, the following is the recommended way forward. 1. The Prime Minister, as Chief Executive, may convene an all-parties conference as soon as possible. In the first round of national dialogue, each party's General Secretary or Deputy Chairman, with a maximum of 3 members from the party, can be invited to finalize the agenda and initially debate on developing a consensus on the following matters of great national importance: A. Charter of Economy, B. Charter of Democracy, and C. Charter of Governance. 2. Focus on democracy should be on adherence to their constitutional roles by Parliament, the judiciary and executive, especially restrictions and restraints on the military and intelligence agencies so they may never get involved in political engineering. Similarly, an agreement on granting no extensions to the service chiefs should be reached. 3. Rule of law and good governance must be ensured through setting up an independent commission on criminal justice system reforms. After these deliberations, assisted by relevant experts, consensus may be reached by the heads of all political parties who can then sign a comprehensive charter of economy, democracy, and good governance as a public pledge to forge a new social contract between the state and society. The opportunity for innovative rekindling of the spirit of democratic renewal should not be lost. The writer is director of the Center for Governance Research, an independent think tank. Published in Dawn, December 10, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. एक ऐसे मुल्क में जो इख्तिलाफात का शिकार है, लोगों, उनके सियासी नुमाइंदों और उनके ज़राए इब्लाग के इदारों के दरमियान इख्तिलाफात की हद बैक वक्त गैर जानिबदार और नाकाबिल कबूल महसूस होती है। न सिर्फ हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होने में बुरे हैं, हम एक दूसरे के साथ बहस करने में भी खौफनाक हैं। मुसन्निफा और कॉलम निगार पामीला पाल के अल्फाज हम पर यकसां तौर पर लागू होते हैं। जिस सूरत हाल में हम अपने आप को पाते हैं, इससे सादा बोलने से कम किसी चीज़ से निमटा नहीं जा सकता है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हुए हैं, ख़ास तौर पर अप्रैल में सियासी बगावत के बाद से। हाइब्रिड हुक्मरानी के मेमार सियासी इंजीनियरिंग में अपने तजुर्बे के नताइज को तकमील तक देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ख्याल किया जाता है कि इमरान खान 2018 में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि उनके हामी भी मायूस हो गए थे और उन्होंने में होने वाले इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए इस्तीफा दे दिया था। लेकिन तार खींचने वालों की तारीख और गलत अंदाजों की एक अजीब व गरीब सूरत हाल की वजह से आवारा पॉपुलिस्ट को एक ज़बरदस्त हमदर्दी की लहर के ज़रिया तारीफ की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया गया था। इसके नतीजे में ज़िमनी इंतखाबात में ज़बरदस्त सियासी फतूहात हासिल हुई और उन ताकतों की साजिशों को बेनकाब किया गया जो 2 मरकजी धारे की पार्टियों के शीनीगन्नों के साथ साथ बिखरे हुए मौका परस्तों का एक गिरोह था जो सियासी शतरंज के तख्ते पर मोहरे बनने के लिए तैयार था। नवाज शरीफ की जानिब से मुकर्रर करदा और इमरान खान की जानिब से 2019 में उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाद स्ट्रिंग पिलर उन चीफ ने खुद को सियासी इंजीनियरिंग के मेमार के तौर पर सबसे ज्यादा बेनकाब किया, जिसके खौफनाक नताइज एक ऐसे कौमी इदारे के लिए भयानक नताइज के साथ सामने आए जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी अजीम कुर्बानियों की वजह से अवाम की इज्जत से मालामाल था। चीन की एक दुकान में मौजूद बैल ने इन्हिदाम का सिलसिला शुरू कर दिया और फिर सियासी गैर जानिबदारी का नाकाबिल यकीन हद तक नाकाबिल यकीन मौक़िफ़ इख्तियार किया, अमली तौर पर हाइब्रिड हुकूमत को छोड़ दिया जिसे 2018 में इसके मनियों ने इकट्ठा किया था। एक अंदरूनी इक़्तिदार की जिदोजहद जासूस उन चीफ की एक अहम तकर्रुरी पर सामने आई। निज़ामी एहतियात को हवाओं में फेंक दिया गया था। तनाज़ा में मुस्तक़बिल के 4 सितारों के बारे में क़ियास आराइयाँ, अफ़वाह मिल, हुक्मरानी में शफ़ाफ़ियत की अदम मौजूदगी और सियासी गुफ्तगू में वक़ार की कमी में एक कौमी मशग़ला,
के लिए गुस्सा बन गई। हमें रियासत और मुआशरे के दरमियान एक नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। दरी असना साइफर के मसले को तनासुब से बाहर उड़ा दिया गया था। डिप्लोमेसी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। वॉशिंगटन में हमारे सफ़ीर के साथ एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार की बातचीत दफ्तर खारजा को खुफिया सिफारती पैगाम के जरिए पहुंचाई गई। इसमें इस वक्त की हमारी हुकूमत और मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स के लिए धमकी आमेज और नाशाइस्ता नाराजगी शामिल थी। कौमी सलामती कमेटी की जानिब से हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत के तौर पर दुरुस्त तशरीह की गई एक डिमाश जारी करने का फैसला किया गया, जो सुपर पावर को एक सिफारती जवाब है ताकि हम दाखिली और खारजा पॉलिसी के डवमेंस में अपने कारोबार पर तवज्जो दें। ताहम बदकिस्मती से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और हकीकी आज़ादी के लिए जिदोजहद करने का बयानिया बनाकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के मकसद को पूरा करने के लिए साइफर का इस्तेमाल किया गया। हमें जनरल अयूब खान की जानिब से आकाओं के बजाय दोस्तों का मातम याद आता है और ज़ेडी भुट्टो ने इसी सुपर पावर की जानिब से जोहरी अज़ाइम पर उन्हें डराने धमकाने के लिए इसी तरह का ख़त पेश किया था। मौजूदा सियासी माहौल से मुंदरजा झैल नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। इमरान खान ने सियासी मुश्किलात के बावजूद अवामी हिमायत हासिल की है। उन्होंने इक़्तिदार दोबारा हासिल करने के लिए अपने मकसद की हिमायत करने के लिए नौजवानों को मुतहर्रिक किया है। बड़े बड़े अवामी जलसे और एहतजाजी मार्च मुरझाने से इनकार करते हैं, हालांकि वो अपने एहतजाज के दो मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं, अपनी पसंद के आर्मी चीफ का इंतखाब और PBM हुकूमत की जानिब से कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान करने पर मजबूर करना। पंजाब और KP की सूबाई असम्बलियों को तहलील करने की उनकी धमकी एक बार फिर कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख हासिल करने का एक हरबा है। तख्त और सियासी बका का खेल खास तौर पर पंजाब में खेला जा रहा है। एक तजुर्बाकार मौका परस्त चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से सियासी जगह हासिल करने में कामयाब रहा है। वो हमेशा बादशाह की पार्टी का हिस्सा रहा है। इसका बादशाह रावलपिंडी में मुकीम है। 1990 की दहाई के वस्त में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान होने वाली कशीदगी के साथ हैरत अंगेज मुमासलत है। अच्छी हुक्मरानी को सियासी मसलहत की कुर्बानगाह पर कुर्बान कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा चीफ सेक्रेटरी और IGP दोनों ने सियासी दबाव के आगे घुटने टेक दिए और छठी पर जाने का फैसला किया। इसके नतीजे में इंतजामी मफलूज होने के कानून की हुक्मरानी और खिदमात की फराहमी के लिए संगीन नताइज बरामद हुए हैं। माशी बहरान और सियासी इख्तलाफात के संगीन नताइज बरामद होंगे। इमरान खान तो वफाकी हुकूमत की जानिब से बगैर किसी पेशगी शराइत के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर सकते हैं या फिर PBM हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा शराइत पर आम इंतखाबात के लिए अक्टूबर 2023 तक इंतज़ार कर सकते हैं, जिसके हैंडलर्स आर्मी कमांड की तब्दीली के पेश नज़र सालसी के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। हम तारीख से जानते हैं कि नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान ने अवाम की हिमायत और इज्जत इस वक्त हासिल की जब उन्होंने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मुकर्रर करदा सियासी एजेंडे के मुताबिक चलने से इनकार कर दिया। लिहाजा मुंदरजा झैल आगे बढ़ने का तजवीज़ करदा रास्ता है। एक ये कि वज़ीर आज़म बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जल्द अज जल्द अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। कौमी मुकालमे के पहले दौर में हर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी चेयरमैन पार्टी से ज्यादा 3 अरकान के साथ एजेंडे को हतमी शक्ल देने के लिए मदऊ किया जा सकता है और इब्तिदाई तौर पर अजीम कौमी अहमियत के मुंदरजा झैल मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा करने पर बहस की जा सकती है। अलिफ मईशत का चार्टर, बे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और जीब चार्टर ऑफ गवर्नेंस। दूसरी बात यह कि जमहूरियत पर तवज्जो पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जीक्यूटिव की जानिब से अपने आईनी किरदार की पासदारी पर होनी चाहिए, खास तौर पर फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर पाबंदियां ताकि वो कभी भी सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस न हों। इसी तरह सर्विस चीफ्स को तौसी न देने का मुआहदा भी तय पाया जाए। तीसरा, फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात पर एक आज़ाद कमीशन के क़याम के ज़रिए कानून की हुक्मरानी और गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाया जाए। मुतालिका माहिरीन की मदद से इन गौर व खौस के बाद तमाम सियासी जमातों के सरबराहान इत्तेफाक राय पर पहुंच सकते हैं जो मईशत,
जमहूरियत और गुड गवर्नेंस के एक जामे चार्टर पर दस्तखत कर सकते हैं जो रियासत और मुआशरे के दरमियान एक नया समाजी मुआहदा कायम करने के अवामी अहद के तौर पर दस्तखत कर सकते हैं। जमहूरी तजदीद के जज्बे को जदीद अंदाज में जिंदा करने का मौका ज़ाय नहीं किया जाना चाहिए। मजमून निगार सेंटर फॉर गवर्नेंस रिसर्च के डायरेक्टर हैं जो एक आज़ाद थिंक टैंक है। डान अखबार में शाये शुदा 10 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.